Hello students, today I am going to discuss part 6 of biomolecules. In this part we will discuss about the DNA or deoxyribonucleic acid. First is location of DNA. In prokaryotic cells, it is located in the cytoplasm. The place where they are located is known as nucleoid. There is also some extra chromosomal DNA present in prokaryotes and known as plasmids. In eukaryotic cells, DNA is largely confined to the nucleus because in eukaryotes, a well membrane-bound cell organelle or nucleus is present and DNA is located inside the nucleus. Whereas in prokaryotes, membrane-bound cell organelles are absent, nucleus is also absent, and the place where the DNA is located in the cytoplasm is known as nucleoid. A small quantity of DNA also occur in mitochondria and plastids in eukaryote. There is circular DNA present in mitochondria and chloroplast in eukaryotic cells. Chemical composition. DNA is the polymer of nucleotides. They are joined together into a linear, unbranched chain. Each deoxyribonucleotide consists of phosphate, a deoxyribose sugar, and nitrogenous bases. There are two types of nitrogenous bases. First is purine and second is pyrimidine. Purines are double ring structure and there are two types of purines, adenine and guanine. Pyrimidines are single ring structure and they are of three types: thymine, cytosine and uracil. Uracil is present in RNA and cytosine and thymine, they are present in DNA. In RNA, thymine is replaced by uracil. Here you can see that these are the pyrimidines. They are single ring structures. They are of three types: cytosine, thymine and uracil. And purines are double ring structure and they are of two types: adenine and guanine. Here nitrogen present at position 3rd and position 1. Here also this is 1 and 3. So there are two nitrogen present at position number 1 and position number 3 in pyrimidines, and in purines there are 4 nitrogen present: 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th and 9th. So at 1st position, at 5th position, 7th position and 9th position. So there are 4 nitrogen present in purines and 2 nitrogens are present in pyrimidine. The alternating sugar phosphate components form the backbone of the DNA. In each chain, phosphate group is attached to the carbon atom at position 5 of the sugar in one nucleotide by phosphodiester bond and to the hydroxyl component of the carbon atom at the position 3 of the sugar in the next nucleotide. Here you can see that this is the phosphate. This phosphate is attached to the carbon number 5 of one nucleotide and carbon number 3 of the next nucleotide. Here at the 3' of the deoxyribose sugar, OH group is present. So phosphate is attached to the OH or hydroxyl group present at the carbon 3 of one nucleotide and carbon 5 of the another nucleotide. The nitrogenous bases are joined to the sugar molecule at carbon 1 position by glycosidic bond and present into space and close in the helix at about
90 degree to the long axis of the helix. Nitrogen 9 of purines and nitrogen 1 of pyrimidine join the carbon 1 of deoxyribose sugar. As we have already discussed, nitrogen present at first position is attached to the carbon 1 of the ribose sugar, and here it is pyrimidine. It is the nitrogen present at position 9 is attached to the carbon 1 of the deoxyribose sugar with the help of glycosidic bond. The two deoxyribonucleotide chains are held together by hydrogen bonds between paired bases, and the two stacks by van der Waals forces. Adenine of one chain is always joined to the thymine of the other chain by two hydrogen bonds, and cytosine is paired with guanosine by 3 hydrogen bonds. So here 3 hydrogen bonds are present, cytosine and guanine, and 2 hydrogen bonds are present, adenine and thymine. So here in this chain you can see that this is the thymine and this one is the adenine, and they pairs with 2 hydrogen bond, one is here and another is here. And in cytosine always pairs with guanosine by 3 hydrogen bonds. So 2 strands of the DNA helix is attached with each other with the help of hydrogen bonds formed between the nitrogenous bases of the 2 strands. Next is the Watson-Crick model of the DNA. J.D. Watson, an American biologist, and F.H.C. Crick, an English chemist, in 1953 suggested a model of DNA molecule to explain its structure. So DNA molecule consists of 2 long, parallel, coiled spirally around a common axis to form a double helix. तो DNA एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसमें 2 हेलिक्स हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रैंड्स होती हैं, 2 एक दूसरे के चारों तरफ क्वाइल्ड होती हैं. Vertical bars of the double helix are joined together by purine and pyrimidine by hydrogen bonds. So this is the one strand of the DNA. This is another strand of the DNA. These 2 strands of the DNA are joined together by hydrogen bond. As we have discussed that the bond present between thymine and adenine, there are 2 hydrogen bonds are present, और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. तो डीएनए की जो 2 स्ट्रैंड है एक दूसरे से इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए अटैच होती हैं. Double helix has a constant diameter of 20 angstrom along its entire length. तो अगर इस DNA मॉलिक्यूल का हम डायमीटर देखें तो डायमीटर इज 20 angstrom. In one complete turn is about 34 angstrom long. It has 10 base pairs. The successive base pairs are 3.4 angstrom apart. यहाँ से यहाँ तक ये एक कंप्लीट टर्न है और इस कंप्लीट टर्न की जो टोटल लेंथ होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है. यहाँ पर जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 एंड 9, 10 जो यहाँ विजिबल नहीं है. तो दे आर 10 बेस पेयर्स पर टर्न. एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं. And the distance between the stacks of 2 base pairs, यानी इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा 34 को हम
10 से डिवाइड करेंगे तो ये 34.34 एंगस्ट्रॉम होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर्स आर 0.34 angstrom. There are two grooves are present. Major groove is about 22 angstrom and minor groove is about 12 angstrom. Here this groove is a minor groove and it is 12 angstrom in length, and this groove is a major groove and it is about 22 angstrom. The helix is generally right-handed, that is the turns clock along the helical axis. Now there are some properties of DNA double helix are given. First property is complementarity of base pairs. The two nucleotide chain of DNA molecules are not identical, but they are complementary to each other with respect to two base pairs. It means that a base pair must consist of purine and pyrimidine. This concept provides that adenine always pairs with thymine and cytosine always pairs with guanine. कम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि अगर एक स्ट्रैंड में इधर एडेनिन है, यहाँ साइटोसिन है, इधर गुआनिन है, यहाँ थाइमीन है, तो जो दूसरी स्ट्रैंड होगी एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमीन, साइटोसिन ऑलवेज पेयर्स विद गुआनिन, guanine always pairs with cytosine, and thymine always pairs with adenine. So complementary means that adenine always pairs with thymine and cytosine always pairs with guanine. It means that if you know the sequence of one strand, then you can predict the sequence of other strand because of this complementary nature of base pairs. These adenine, they are attached to the thymine with the help of double bond, cytosine with the help of triple bond, guanine attached with cytosine with the help of triple bond, and thymine with adenine with the help of double bonds. Next is antiparallel direction. The two strands of DNA molecule run in opposite or antiparallel direction. This means that one chain runs from 5' to 3' direction, while other chain runs from 3' to 5' direction. Here you can see the direction of this strand of DNA is from 3' to 5'. This is the 3' end. So if the direction is from 3' to 5', then here it is 3' and 5'. It runs from here in anti-parallel direction. क्योंकि ये 3' से 5' डायरेक्शन में है और ये 5' से 3' डायरेक्शन में है, यानी इसका एक एंड अगर 5' होगा तो दूसरी स्ट्रैंड का जो एंड होगा वो 3' होगा। अब ये है कि हम इसको 3' या 5' क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस एंड पर डीऑक्सीराइबोज शुगर का ये 5' कार्बन है जिससे कि फॉस्फेट अटैच है, तो ये एक 5' एंड होगा। नीचे वाले एंड पर देखें तो ये 3rd कार्बन है और 3rd कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये 3' OH एंड होगा। तो हर डीएनए का के 5' एंड पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और 3' एंड पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 3' एंड पर ये OH ग्रुप प्रेजेंट है और 5' एंड पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। 5' इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप इस डीऑक्सीराइबोज शुगर के 5th कार्बन से अटैच्ड है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3rd कार्बन से अटैच्ड है। तो जिस एंड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो 3' एंड होगा और जिस एंड पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा वो एक 5' एंड होगा। Chargaff's rule: the DNA molecule always has adenine-thymine base pairs, and this adenine-thymine base pairs equal in numbers to
GNC, यानी नंबर्स ऑफ एडनिन प्लस थाइमीन is equal to number of guanine and cytosine. So this rule is called Chargaff's rule, or we can say that number of purine are equal to number of pyrimidine. Next property of DNA is the denaturation and renaturation. If the DNA molecule is exposed to high temperature, एन एसिड और एल्काली, अगर किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल को हाई टेम्परेचर या एसिड या एल्काली से एक्सपोज किया जाए तो जो दो स्ट्रैंड हैं ये अनवाइंड हो जाती हैं और सेपरेट हो जाती हैं। सेपरेट होने का रीज़न ये है कि जो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और इस कंडीशन को हम डीनेचुरेशन कहते हैं। लेकिन इस डीनेचर डीएनए को अगर दोबारा से लो टेम्परेचर पर रखा जाए तो ये दोनों स्ट्रैंड रीएसोशिएट हो जाती हैं, क्योंकि इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं बेसिस के, नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड दोबारा से बन जाते हैं और इस प्रोसेस को हम डीनेचुरेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज पैलिंड्रोमिक डीएनए. It is a part of DNA in which the basis sequence of one strand is opposite to that of the strand when read in opposite direction. यहाँ पे अगर आप देखें कि इसको अगर आप इस डायरेक्शन में रीड करते हैं फ्रॉम 3' to 5' डायरेक्शन, तो ये C, GG, AA, TT, C, GG है। लेकिन इसको भी अगर आप 3' to 5' डायरेक्शन में रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सीक्वेंस है वो सेम है। यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे C था, यहाँ भी C है, इधर GG है, यहाँ भी GG है, यहाँ पर एडेनिन एडेनिन है, इधर भी एडेनिन एडेनिन है, थाइमीन थाइमीन इधर भी है, साइटोसिन साइटोसिन यहाँ भी वही है, गुआनिन एट 5' एंड गुआनिन इज हेयर। तो इन स्ट्रैंड्स को अपोजिट डायरेक्शन में जब रीड किया जाता है तो दे आर रेड सेम इन अपोजिट डायरेक्शन। So this type of sequence of DNA is known as palindromic sequence. They are of very great importance in biotech because the cutting site of the restriction enzyme lies within these palindromic sequences. DNA में जो ये palindromic sequences हैं इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो डीएनए को कट करते हैं, जिसका बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत यूज़ है, तो ये इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो कटिंग साइट है वो इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के अंदर ही पाया जाता है।